So function is a relation between two non-empty sets A and B. These sets should be non-empty and they can contain quantities, objects, ideas, whatever, but they have to be non-empty, such that for every element in the first set there has to be a unique element in the second set. This uniqueness of the element in the second set, which is associated to some element in the first set, is the characteristic property of a relation that makes a relation a function. An ordinary relation may not have this uniqueness restriction. Algebraically, these relations are defined by taking Cartesian products of A and B, which become set of ordered pairs, और उस set of ordered pairs यानी Cartesian product A cross B का कोई भी subset relation कहला सकता है. But only that relation is a function for which y is unique for any chosen x. We also say that function is a rule of assignment, and that assigns a unique value fx that we call y in the second set for any x that we have in A. Generally, x is input and y is output. We also use terms independent variable or pre-image for x, and dependent variable and image of x under f. So these are terminologies that you may be familiar, and if not familiar, we are discussing it for the once last time, and may visit these properties for many other things again and again. एक line में bold कीजिए, the definition of function also means that whenever we are given 2 points in the graph, y1 is equal to fx1, इसका मतलब एक point है graph पे x1 y1, and there is another y2 is equal to fx2, यानी x2 y2 एक और point है. Now if the images y1 and y2 are not same, then the pre-image or x value cannot be same. And that also is stated as no two ordered pairs can have same first element. y1 और y2 यानी images different है, तो pre-images जो हैं इनको भी different होना चाहिए. मैंने उस दिन जो डिस्कस करना शुरू किया था, I saw that मैंने इसको not equal नहीं लिखा हुआ था, equal लिखा हुआ था. That is not correct. So actual message is this: no two ordered pairs on the graph. You pick 2 points that are ordered pairs. No two ordered pairs can have same first element. You know that the domain of a function is basically set of all values of the independent variable or elements of the first set for which a value of y is assigned in the second set. Domain notation, standard notation is this. And this has to be a subset of A that can be completely A, but not necessarily. Similarly, the set of all values of y which are images of some x in the domain. These values of y form the set which we call range of values of function. And generally we denoted this R sub f, and this has to be a subset of B. Now, if two sets A and B are subsets of the set of all real numbers R, then graph of the function of f is the set of all points that we can algebraically written as. When I say algebraically, मैं set notation इस्तेमाल कर रहा हूँ, ordered pair लिख रहा हूँ कि भाई function जो है या function का graph जो है वो set of points है. Set of points. Points in a plane are written as ordered pairs x, y. X coming from the domain of the function and y coming from the domain, range of the function. And domain of the function is necessarily a subset of the first set A that we are talking about. And the range of function is the second set B that we have talked about. And this graph, of course, lies in what we call real plane R square, जिसको आप XY plane आमतौर पे कहते हैं. A graphical property of function is that any vertical line in R square intersects, if it really intersects the graph of a function, then it does that exactly once. कोई भी function आप उसका graph बनाएं तो उस function की property ये है कि उस graph पे किसी जगह भी आप vertical line draw करें तो vertical line
टेस्ट भी कहलाता है ये। वर्टिकल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं करेगी, विच इज अगेन an exhibit of this sentence that no two ordered pairs can have same first element. यानी अगर images different है तो pre images भी different होंगी. So we now concentrate on some of the real valued functions of a real variable. That means input p हमारा set of r से real number से आ रहा है और output p. In the beginning we said कि function जो है ऐसा relation है जो किसी भी set of objects और किसी भी set of दो set of objects दरमियान सोचता है. But now we concentrate on only subsets of real numbers. So our input variable will be a real number and output variable will be a real number. And whenever we have something wrong with this thing, we will consider that separately. The function that we concentrate more on this in the study of calculus or advanced calculus, they are classified into two major classes, the algebraic functions and the transcendental functions. Have you heard this term transcendental functions before? Anyone? No, sir. नहीं सुना? पक्की बात? Trisha, you are saying, हाँ, सुना है, साथ सुना है, good. हम सुना रहे हैं दोबारा. Algebraic functions क्या होते हैं और transcendental functions क्या होते हैं? I'll be going through that. So algebraic functions जो हैं polynomials, basically general polynomial, nth degree polynomial in any variable is written as this, and you should be familiar with this polynomial idea. So algebraic function वो होते हैं जो polynomial से बनते हैं. A linear polynomial or a quadratic polynomial or a cubic polynomial and so on and so forth, a general polynomial of degree n. So when we talk about algebraic functions, they are based on polynomial functions. और polynomial function से मजीद algebraic functions बन सकते हैं, लेकिन इस polynomial की general polynomial की बात खास बात ये है कि जो इसकी डिग्री है highest, ये finite है. So we consider polynomials as algebraic functions जब तक के इन polynomials की डिग्री finite है. अगर इन polynomials ऐसे आ जाएं जो infinite है, तो they go out of the class of algebraic functions. All polynomial functions are defined, as far as domain is concerned. Every polynomial function is defined for every real number. So there is no restriction in the domain of any polynomial function. Yes, you can have a restriction on the range. जब graph बनाते हैं तो पता चलता है कि polynomial function y values infinity पे जा रही है नहीं जा रही, minus infinity पे जा रही है नहीं जा रही. लेकिन generally domain is the whole set of real numbers. Range may not be the whole set of real number. Range may be a subset of real numbers. These are some graphical representation like linear polynomial, like a straight line hai, quadratic polynomial, parabolas hai, upward or downward opening parabolas hai. Then cubic polynomials have a number of possibilities of graphs. In general, we say that आप maxima minima पढ़ चुके हैं, तो a cubic polynomial against a quadratic polynomial. Quadratic polynomial में एक extreme value होगी, या सिर्फ minimum होगा या सिर्फ maximum होगा. In cubic polynomials, you can have one maximum and one minimum arranged in different order. But there are cubic polynomials whose graph have does not contain any extreme value like relative maximum, relative minimum. Rather, it has an inflection point. In fact, ये cubic function के graphs हैं, simple cubic function y is equal to x cube और y is equal to minus of x cube. तो इस में इसी तरह अगर 4th degree में चले जाएं तो there can be 3 extreme values, 2 minimum, 1 maximum और 1 minimum, 2 maximum. इसी तरह जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो रिलेटिव एक्सट्रीमा बढ़ते चले जाते हैं, और हो सकता है ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट 10th degree polynomial. देयर विल बी एट मोस्ट 9 एक्सट्रीम वैल्यूज. उनमें से कुछ मिनिमम होंगे, कुछ मैक्सिमम होंगे. दैट इज द मोस्ट.
इन जनरल दे मे हैव लेस, उनमें से कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज जो है वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट में फंस जाएं तो 9 एक्सट्रीम वैल्यूज होने के बजाय आपके पास 5 हो या 6 हो, ब्ला ब्ला. सो then polynomial function से बनने वाला एक another algebraic function that we call rational function, which is made from the ratio of two polynomials, an nth degree polynomial divided by an mth degree polynomial. Of course, this rational function will be defined only for those values of x for which the polynomial in the denominator is not zero. If it is zero, then that is that rational function is not defined at that point. So any rational function has a restricted domain, and that restriction is in fact generated by the presence of this polynomial in the denominator. इस polynomial के जो कि mth degree है, like any other polynomial, मैंने यहाँ पे कहा nth degree polynomial. अभी तो हम बात कर रहे थे कि उनकी एक्सट्रीम वैल्यूज कितनी होंगी, दैट डिपेंड्स ऑन द डेरिवेटिव ऑफ द पोलिनोमियल. तो जब 4 डिग्री पोलिनोमियल है तो उसका डेरिवेटिव 3rd डिग्री आएगा, तो उसके 3 जीरो हो सकते हैं, जिसकी वजह से 3 एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी. लेकिन पोलिनोमियल खुद इफ इट इज लीनियर, इसका एक जीरो होगा, यानी कोई एक एक्स वैल्यू होगी जिसपे ये जीरो होगा. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसके 2 एक्स वैल्यूज पे जीरो हो सकता है. हाँ, आपको याद होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ते वक्त आपने सुना था डिफरेंट केसेस, real and distinct roots, real and repeated roots, and complex roots. इसी तरह क्यूबिक में 3 रूट्स होंगे. अब वो 3 रूट्स रियल हैं या नहीं, तो क्यूबिक के लिए एक रियल होना जरूरी है, बाकी 2 रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. So in general, nth degree polynomial has n roots. That means there are n values of x where the polynomial will be 0. So when we talk about rational functions, तो denominator जितने डिग्री का polynomial है उतने जीरोस पॉसिबल हैं. इतना इसका मतलब है उतनी एक्स वैल्यूज जिन पे कि डिनोमिनेटर को फंक्शन जीरो हो रहा है, वो इस रैशनल फंक्शन के डोमेन में नहीं होगा. So domain and range is one of the first problems in the study of calculus that students explore at elementary level, and I hope you have done that. These are 2 sample graphs for that I have copied from some book, like y is equal to 2x upon x square minus 1. तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, जिसमें आपको कुछ एसिम्पटोट्स भी नजर आ रहे हैं, आपको इसमें कोई एक्सट्रीम वैल्यू नजर नहीं आ रही, इसमें आपको एक जेन्युइन इन्फ्लेक्शन पॉइंट नजर आ रहा है. इसी तरह यहाँ पे एक फंक्शन है x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 डिवाइड बाई 2x प्लस 1. इसमें भी आपको एसिम्पटोट नजर आ रहा है, मगर यहाँ के एसिम्पटोट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, बट ये ओब्लिक एसिम्पटोट है, एंड वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन. Irrational function. Now, irrational functions are not defined as in that generality as we have defined rational function. Any rational function is put in the form, can be put into the form polynomial divided by polynomial. But when we talk about irrational functions, then we talk about कि भाई polynomial की power जो है that is 1 upon q, that I'm taking qth root of a polynomial, or I am taking qth root of a rational function, and I can make varieties in which I have in power a fractional number. I've written 1 upon q. That is not the ideal thing. It can be p upon q, where p and q have no common factor, and that also make it a irrational function. Irrational function की जो irrationality है, वो ये नहीं है कि रिजल्ट नेसेसरीली रैशनल फंक्शन आएगा. इरेशनल फंक्शन की रैशनैलिटी ये है कि आपके पास पोलिनोमियल्स में पावर्स इंटीजर होती हैं, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर. लेकिन इरेशनल फंक्शन में रैशनल फंक्शन में नेगेटिव इंटीजर्स भी आ सकती हैं पावर, लेकिन इरेशनल फंक्शंस में पावर जो है वो फ्रैक्शनल्स आ सकती हैं, p upon q या 1 upon q. When I say p upon q, that means I'm talking about rational numbers. So powers rationals आ सकती हैं, और मैंने एग्जांपल बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं ली इसके अंदर. y is equal to under root x. आप इस रिलेशन से वाकिफ हैं, x is equal to y square. ये पैराबोला है जो कि वर्टेक्स ओरिजिन पे है और राइटवर्ड खुलता है, लेकिन पैराबोला फंक्शन क्या ही हो सकता है वो वाला. यानी इफ आई कंसीडर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो उसका ग्राफ ये भी होगा और इसके नीचे भी आएगा.
लेकिन फिर वो फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट करने से वर्टिकल लाइन उस पैराबोला को 2 पॉइंट पर कट करेगी. To make it a function, I have taken y is equal to under root x. और जैसे ही मैंने x की पावर 1/2 किया, ये irrational function बन गया. That is just an example to show you that irrational function किस तरह से बनते हैं. I hope that is clear. Now, one thing, मैं जब कैलकुलस पढ़ाता हूँ तो इस जुमले पे बहुत जोर देता हूँ. जब भी हम कहते हैं कोई चीज डिफाइंड है, a function is defined for some x. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि when we take the image y, which we write as fx, this should be a number, real, finite, और यूनिकनेस जो है वो तो बाय डेफिनेशन फंक्शन के साथ लगी हुई है. लेकिन मैं ये 3 वर्ड्स जो हैं, जब भी कोई चीज फंक्शन डिफाइन करना है, ये 3 वर्ड्स ध्यान में रहने चाहिए. अगर इन तीनों में से कोई चीज गलत है तो फंक्शन डिफाइन नहीं है. लिमिट डिफाइन करनी है, रियल, फाइनाइट एंड यूनिक. अगर इनमें से कोई भी एक चीज गड़बड़ है, लिमिट डिफाइंड नहीं है. हाँ, कुछ लोग लिमिट एट इंफिनिटी की बात करते हैं, दैट इज एक्सेप्शनल केस. डेरिवेटिव डिफाइंड है या नहीं, तो डेरिवेटिव वैल्यू शुड बी रियल, फाइनाइट एंड यूनिक. तो ये 3 वर्ड्स चाहिए जहन में रहने चाहिए, स्टार्टिंग विद द आइडिया ऑफ फंक्शन. Few words about transcendental function, not too many. I'll be just considering some examples. Now, I said few word about the word transcendental. It is sort of a synonym to transfinite. That means beyond finite. तो algebraic functions जो हैं उनमें polynomials involved हो रहे हैं जो कि finite degree polynomials हैं. मगर transcendental functions वो functions हैं जिनकी अगर पावर एक्सपेंशन लिखी जाए, लाइक ई पावर एक्स, आपने पढ़ा होगा यकीनन कि उसकी पावर एक्सपेंशन ये है. इट नेवर स्टॉप्स, इट गोज टू इंफिनिटी. So this is exponential function is not representable as a finite polynomial. अगर आप exact e power x की बात कर रहे हैं तो it is an infinite polynomial, and we are talking about such infinite polynomials जिसके लिए term इस्तेमाल हो रही है transcendental function. So the exponential function is the first example of the simplest example of a transcendental function. Very elementary level, and we write down exponential function as a into b raised to power x, where a and b are constants. B has to be positive. Why b has to be positive? We are talking about b power x. So when if we allow b to be negative, the power x में बहुत गड़बड़ होती रहेगी. कहीं imaginary number आ रहे होंगे, like complex numbers. इसका जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, वो है y is equal to e power x. लेट मी आस्क वन थिंग, मैं बहुत ज़्यादा तेज तो नहीं बोल रहा? नो सर. नो सर. अच्छा, मेरे बोलने की स्पीड अगर सही है तो इज इट क्लियर आल्सो कि जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? यस सर. यस सर. यानी अल्फाज समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, ना आ रहे हैं उसकी फिक्र नहीं मुझे अभी. अल्फाज समझ में आ रहे हैं सर. बस ठीक जी है. सर. दैट्स गुड. आई होप कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये ज्यादातर चीजें आप पढ़ चुके हैं. यस सर. यस सर. बट स्टिल आई वांट टू गो थ्रू दैट कि जब मैं आगे बात करूं तो ये मेरे पास सर्टिफिकेट हो कि आई हैड रिवाइज्ड दिस. ओके, दो आई एम लेजी, बट यू नो व्हाई आई एम लेजी. जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्म है वो बेस जो है, यहाँ पे बेस आर्बिट्री है b, विद द रिस्ट्रिक्शन के b हैज टू बी पॉजिटिव. यहाँ एक स्पेशल बेस है जिसको हम बेस ऑफ नेचुरल लॉग कहते हैं, जो कि रैशनल नंबर है, और जाहिर है इसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है. रैशनल नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इनफिनिट हो सकती है, बट उसमें एक रेकरिंग पैटर्न होता है. इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इनफिनिट होती है और उसके अंदर कोई रेकरिंग पैटर्न भी नहीं होता. तो e is the base of natural log, and this function y is equal to e power x
मैथमेटिशियंस ने बिला वजह नहीं बनाया, बहुत से नेचुरल फिनोमेना से ये खुद पॉप अप होके निकलता है. व्हेन वी स्टडी सम नेचुरल फिनोमेना, वहां से ये खुद ब खुद आता है. And this function is defined for every real number. That means the domain is the whole set of real number, and the range is also the whole set of real number. Maclaurin expansion of y is equal to Maclaurin expansion हम at the end of this first review discuss करेंगे, लेकिन यहाँ पे बता दें कि ये expansion जो हमने लिखा हुआ है, it is called Maclaurin's expansion of y power x. और this exponential function जो है, चाहे वो base b हो, चाहे बेस ई हो, इसके ग्राफ्स की डिफरेंट शेप्स जो हैं, ये जैसे वाई ई पावर एक्स का ग्राफ ये है. व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, नो इट्स नॉट दिस इज इट. When x is equal to 0, y is equal to 1. When x is positive, it becomes larger and larger. Y values are become larger and larger. And when x is negative, so e power minus 1, and it becomes 1 upon e type kind of thing, and this starts decreasing to the left-hand side. These are variations in the sense this is e power minus x. This is something else. Guess what it is? This Log. This is log. That's good. So next function that we consider is the logarithmic function. मैं log function को generalize करूं तो a times log base b of x, a b constants हैं और b again positive है. इसका domain b the whole set of real numbers है, मगर इसके रेंज में हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आती है. In fact, logarithmic function is defined in terms of the exponential function. हम इसको as a reflection of log define exponential function define करते हैं, और आपको ये famous relation याद होगी from school algebra कि log base b of x implies that x is equal to b power y and vice versa. तो अगर मैं natural log consider करूँ ln, तो that is equivalent to x is equal to e power y. अच्छा, log x जो है ln x is equal to 0 पे डिफाइन नहीं है. नॉट ओनली कि x is equal to 0 पे डिफाइन नहीं है, बल्कि negative x पे भी डिफाइन. Yes, I have mentioned it. Domain of this function is only positive real numbers, so it is not defined for negative real numbers. लेकिन अगर मैं इसकी एक्सपेंशन लिखना चाहूँ तो later on we'll see that log x की exponential expansion Maclaurin expansion नहीं लिखी जा सकती because x is equal to 0 पे डिफाइन नहीं है. तो instead of expansions of log x ln x, the books mention expansion of log 1 plus x, क्योंकि log 1 plus x जो है वो 0 पे डिफाइंड है, और इसके डेरिवेटिव्स लेते हैं वो भी 0 पे, क्योंकि डेरिवेटिव लोगे तो 1 plus x आएगा, तो वो भी डिफाइंड है. लेकिन log x के डेरिवेटिव लोगे तो 1 x को डिफाइन नहीं है 0 पे. और मैक्लॉरिन एक्सपेंशन जो है वो x is equal to 0 पे फंक्शन की वैल्यू और डेरिवेटिव वैल्यूज डिमांड करती है. तो instead of writing down expansion of log x, the books mention the expansion of log 1 plus x. ये चूंकि आपको आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में और लॉग फंक्शन में जो रिलेशन है, इससे रूल्स ऑफ लॉग जो है डिड्यूस किए जाते हैं, and you see that these and every one of them can be proved using this basic property, and you must have proved them somewhere. This is the graph of log base 2. When x is equal to 2, its value should be 1, because log base b of b is 1. So this is a graph of log base 2, and you can consider graphs of other log functions. More transcendental functions, and the examples are trigonometric functions, particularly because sine and cosine, they can also be written as infinite polynomials, and that is also done using Maclaurin's expansion. Sine ka expansion jo hai, that starts with power x
then all odd powers are involved up to infinity. And the coefficients are of the form 1 upon n factorial with plus minus signs. Same is the case with cos x, that its expansion has plus minus signs. The coefficients are of the form 1 upon factorial of even numbers. Here it is factorials of odd numbers. Expansion of cos starts with 1. When x is equal to 0, sign is 0, so every term contains x in the expansion. Cos 0 is 1, so not every term contains x. The first term is 1, so cos 0 is 1. The domain is the whole set of real numbers, but the range of both sine and cosine is between -1 and 1. Tangent, of course, I have not mentioned, and we don't usually go to uh, try finding out polynomial expansion of tangent and cotangent. That's a tedious job, and but we know that this is sine upon cosine. That is a ratio of two trigonometric function or two transcendental functions. So it has to be transcendental, whether we are able to find out that finite polynomial representing tangent or not. But we should know the domain and the range for tangent, cotangent, secant, cosecant. Writing down domains in this form, I'm not going to explain all these things, just to look at the figure. Sine, cosine are बड़े सीधे साधे functions हैं, sinusoidal functions, and you know that the wave never go beyond the height 1, and below it cannot go -1, below -1. But tangent के ग्राफ आप इन ग्राफ से familiar हैं कि -π/2 से π/2 के दरमियान इसका एक ब्रांच है, फिर π/2 से 3π/2 के दरमियान एक है, -3π/2 से -π/2 के दरमियान एक है, and that जो है allows me to write down कि भाई ये odd multiples of π/2, π/2 से 3π/2, -π/2 से π, तो यहाँ जो कुछ लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि domain of the function for tangent is between two consecutive odd multiples of π/2, and consecutive is indicated here. The range of function, the output values for tangent goes from -infinity to infinity, and so on. Similarly, secant or cosecant functions, they are interesting. Cosecant function, इसमें cosecant को छोड़ो, वो खुद देखना. Secant is again lying between -π/2 and π/2, one branch, and then π/2 to 3π/2. So you have a similar domain for secant function as tangent. Whereas cotangent and cosecant, you have intervals that are multiples of pi, consecutive multiples of pi. Whereas the range of these functions, secant and cosecant, आप देख रहे हैं कि y वैल्यूज में गैप आ रहा है, 1 से नीचे नहीं है, -1 से ऊपर नहीं है, ये बीच में गैप आ रहा है, and that gap is mentioned here, that range of secant and cosecant both 1 से infinity union -infinity to 1, -infinity to -1 भाई. देख रहे हो ना कि एक ब्रांच जो है यहाँ पे 1 से infinity जा रही है, दूसरी ब्रांच y values -1 से -infinity are. So we write it -infinity to -1, then 1 to infinity. So you people should have these things on your tips if you are really crazy about mathematics. Of course, मैंने यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का जिक्र करके छोड़ दिया, लेकिन जब मैंने कहा था कि फंक्शंस दो टाइप के हैं, अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल, तो यहाँ पे मैंने एक और बात भी कही थी, और वो ये कि there can be other functions that are made artificially, but that can represent real, physical or other phenomena, like absolute function y is equal to mod x, or y is equal to mod x से बनने वाले दूसरे functions.
मैं एक आध पे आऊंगा किसी वक्त, बट फॉर द टाइम बिंग मैं फंक्शंस की डिस्कशन यहाँ पे रोक के, तो आई एम गोइंग टू revise the concept of limit. Limited continuity is the topic, but first we concentrate on limit. आप अपने स्कूल डेज से, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे आपका ओ लेवल ए लेवल हो, लिमिट निकालते चले आ रहे हैं फंक्शंस की। और आपके कैलकुलस जिसने भी पढ़ाया होगा आपको बताया होगा कि यार ये जो तुम एक्स के अंदर फंक्शन के में एक्स की जगह ए रख देते हो, ये लिमिट निकालना नहीं है, ये वैल्यू निकालना है। लिमिट क्या है? लिमिट क्या, you write this expression limit x approaches a of the function is equal to L. But the real meaning of this sentence is that if whenever values of f are close to the number L, necessarily the values of x must be close to a, जिसको के किताबों में लिखा होता है ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, जिससे आप लोगों को बड़ा डर लगता था ना? जी सर। Yes, जी sir. सर। अब भी लगता है? Yes, sir. सर अभी भी लगता है। जब तक इससे दोस्ती नहीं होगी ना, उस वक्त तक मैथमेटिक्स से दोस्ती नहीं है, समझ लो। सर आप इंट्रोड्यूस करा दें फिर। सर ये नोटेशन ही समझ नहीं आते। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। This is something which makes complicated things very simple. सर हमारे लिए तो कॉम्प्लिकेट ही करते हैं। यार उसके लिए ना तो एप्सिलॉन डेल्टा की जो एक्सरसाइज है उसमें हार्वर्ड एंटन में वो डिस्कस करनी पड़ेगी किसी वक्त। मैं टाइम निकालूंगा उसको डिस्कस करने का। मैं एंटन के कॉरेस्पॉन्डिंग टॉपिक जो है ना वही खोल के तुमसे डिस्कस करूंगा किसी वक्त इनकी डिटेल। बट फॉर द टाइम बिंग मैं समझता हूँ कि मेरे पास जो ऑडियंस बैठी हुई है वो कैल 1, कैल 2, कैल 3 करके आई है, लिहाजा उसको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर हैज टू बी अ डेल्टा पॉजिटिव सच दैट fx minus L is less than epsilon whenever x minus a is less than delta. When we define limit, उसके साथ ये होता है कि x minus a mod जो लिखा हुआ this is greater than 0. इसका मतलब है हम x को a नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब लिमिट डिफाइन कर रहे होते हैं तो फंक्शन x fx का a पर डिफाइन होना जरूरी नहीं है, और हम x is equal to a पे काम कर भी नहीं रहे, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए we have written this mod x minus a. Now, what's the meaning of mod x minus a? It simply means the distance between arbitrary point x and a. Left side means that this arbitrary point a नहीं हो सकता. Right side means that this arbitrary point x is close to a, as epsilons and deltas are always small number. कितने small? Have you heard this sentence? As small as इन्फिनिटेसिमली क्लोज। इन्फिनिटेसिमली क्लोज। रुक जा। इन्फिनिटेसिमल, इन्फिनिट के लफ्ज के आगे डेसिमल लगाना है। इन्फिनिटेसिमल, infinite is something so large that you think of the largest possible and it is larger than that. This is one way of defining infinity. Can you repeat my sentence? Can someone repeat my sentence? किस तरह डिफाइन किया मैंने इन्फिनिटी को? इन्फिनिटी को डिफाइन किया मैंने अभी। Sir, infinity is something that is very large number, and infinitesimally is something that is very. You think of the largest number, infinity is larger than that. ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, ये मैथमेटिकल फिलॉसफी है, इसको एब्जॉर्ब करना है। इन्फिनिटी क्या है? और जी इन्फिनिटी सबसे बड़ी चीज है, नहीं, दिस इज नॉट द वे ऑफ डिफाइनिंग इन्फिनिटी। ये सबसे क्रूड फॉर्म जो है, यू थिंक ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर and infinity is larger than that. Now, what is your limit of assuming the largest possible number? 1000?
1 lakh, 1 billion, 100,000 billion, it is still a finite number. And infinity is greater than that. And if I'm talking about dollars, then hundreds of billions or trillions of $1 trillion, it seems huge. The person possessing it is the richest person in the world. But that amount as a number is finite. So infinity is more than that. You think of the largest possible, it is greater than that. So as promised by KE, the light is gone. And I had my laptop charged fully. I hope my Wi-Fi device is also fully charged, and there is no difference except that मेरा face जो है वो सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन से रोशन है, otherwise there is no light around. मैंने कमरा बंद किया हुआ है. हाँ, so what is infinity? Hello.